होगे तो दूसरे की चीज को कैसे तुम समझ पाओगे, है ना? वैराग्य, विवेक, वैराग्य, and we saw shat sampatti. We saw the six wealths. Today we are going to see the sixth wealth, and that is contentment, tripti, or samadhan as it is called. Tell me what you're not contented about. Take 2 minutes of your time, 2 मिनट लो और लिख डालो जिसके प्रति तुमको समाधान नहीं है. I am not contented with wealth. I am not contented with my house. I wanted a bungalow. I wanted a villa, but I am living in a flat. Write down all your discontentments. Just write down. Take some time, take 2 to 3 minutes and write down all your discontentments. जिसके प्रति आपकी अतृप्ति का भाव है, अतृप्ति, where you are not contented with anything. Just take 2 minutes and write all of them down. लिख दो. आज सारी चीजों को बॉदरेशन के बास्केट में एक तरीके से लिख के खत्म करो आज. Write it and leave it right now. I would be happy if those people who come regularly come on to the videos. It will be nice to see. Good. Write down all your discontentments. Atripti. I am unhappy with my wife. I am dissatisfied with my job. I am dissatisfied with my fiance. I am dissatisfied with not getting happy. Write down everything of your discontentments. Write down. Let's see how far your mind can go. लिख डालो. जितनी भी अतृप्ति के कारण है सब लिख डालो. लिखो. आज देखते हैं क्या करना है उसका. हाँ, गुस्सा आता है, वो भी एक अतृप्ति है, ठीक है, उसको भी लिख दीजिए आप. क्रोध कम नहीं आता है. If you're not happy with the mentor, your mentor is not good. Write down that also. It's okay. I am fine with it. If you're not happy with the mentor, write down all the discontentments you have. You're discontented with the flat that you're staying in. You're discontent with your job profile. Wonderful. Good. Write it down. Write it down. You're not happy with your career progress. Okay. Health. You're discontented with your health and you're still attending the session. Wow. Okay. Wow. लिखता रहो. मन में बहुत बुरे ख्याल आते हैं, अच्छी बात है, आने दो, आने दो. कभी ना कभी तो कचरा साफ होगा ना. लिखता लो. Just write down everything. Just write down everything. You're discontented with everything. How many of you are done? Just raise your hands. कितने लोगों ने लिख लिया? हाथ ऊपर कर लो. लिख लिया? चलो, बढ़िया. Now sit straight. Take a deep, long breath in. And as you hold your discontentment, hold your breath. अब जैसे अपनी सारी की सारी अतृप्त इच्छाएं हैं, उसको जैसे रखा है वैसे ही अपने उसके अंदर लिख लो. बस बैठ जाओ. सांस तब तक मत छोड़ना. डोंट लीव योर ब्रेथ टिल आई टेल यू. टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड योर ब्रेथ. होल्ड योर ब्रेथ. Hold your discontentment within you. Hold your discontentment within you. And breathe out with a ha. Just say ha and breathe it out. And see where is the discontentment right now. Do it 3 to 4 times. Take one more deep breath in. सांस ले, सांस रोके, रोके, और अपनी जितनी भी अतृप्तियां हैं उसको हा कहते हुए छोड़ दो. हा. Just breathe out with saying a ha. With a ha sound. And surrender all these discontentment to this universe. आंखें बंद रखें और अपनी ये जितनी भी अतृप्त इच्छाएं हैं वो परमात्मा को, इस सृष्टि को
समर्पित कर दो. It might be about looking for your soulmate. It might be with your job. It might be about your career. It might be about your personal. कुछ भी हो, सब छोड़ते जा रहे हो, सब छोड़ते जा रहे हो, तृप्त होते जा रहे हो. Just feel that contentment is descending in you right now. Observe that your body is getting contented right now. इस क्षण आपका शरीर तृप्त हो रहा है, आपका मन तृप्त हो रहा है, आपकी भावनाएं तृप्त हो रही हैं. स्थिर हो जाओ. Become still. Just become still. स्थिर हो जाओ इस क्षण. शरीर की जो भी जरूरत है वो प्रकृति देख लेगी. Whatever is the need of this body, the nature will give you. Just feel contented right now. This contentment is giving you the joy within. ये तृप्ति अभी आपको अंदर से एक खुशी दे रहा है. In the past, whatever you have felt, whatever was needed was given to you. इससे पहले भी आपको जो चाहिए था वो मिला है. तृप्त होते चले जाओ. Become contented right now. If not now, then it is never. अभी तृप्त नहीं हुए तो आगे कभी भी नहीं होंगे. तृप्त होते चले जाओ. Become contented right now. And drop all the discontentment. In the universe, allow the discontentment to just move around in the universe. इस क्षण जितनी भी अतृप्ति है उसको इस विश्व में समर्पित करते चले जाओ. Keep on offering all your discontentment to the universe right now and feel free. मुक्त होते चले जाओ. Contentment is in the present moment. तृप्ति और समाधान केवल इस क्षण में है. उसको अनुभव करें.
रिलैक्स एंड रिपोज इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्राम करें. Relax and drop all your thoughts right now. विश्राम करते चले. और जब पूर्ण लगे धीरे से आंखें खोल सकते हैं. When you feel complete at your own pace, you may open your eyes with a smile. जय गुरुदेव. So, how many of you are feeling contented right now? कितने लोगों को तृप्ति महसूस हो रही है अभी, है ना? बस. Contentment is felt only now. तृप्ति केवल अभी हो सकती है. बाद में मैं तृप्त होऊंगा, बाद में मैं तृप्त होंगी, is a dream. Contentment in future is a dream. You can be contented right now in the present moment. Absolutely. Right? Yes or no? And in contentment, creativity comes out. सृजनात्मकता केवल तृप्ति के भाव में आती है. जब सब कुछ करके थक गए हो, when you're tired of doing everything and you say, I can't handle it more, is when a new source of happiness comes in. A new source of creativity comes in. Have you observed that? When you're so tired and you have gone of everything, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है कि नहीं? देखा है कि नहीं देखा है? When you have done everything that you wanted to do and there is nothing that you can do, and then you say, okay, right? Absolute contentment can come only when you are in the present moment. So how many of you are in the present moment? कितने लोग present moment में अभी? Are you all in the present moment? Yeah. See, just see, happiness program, each and everything is connected to the deep knowledge that we are learning in the advanced course. Yeah. It's such a beautiful thing, contentment. If that you get, you have achieved everything. From contentment, you get gratitude. From gratitude, you get grace. And trust me, you have no choice other than to be contented because you have got more than what you deserve. Isn't it? Yes or no? तृप्ति के सिवा और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि तृप्ति अगर बढ़ाओगे तो तृप्ति से कृतज्ञता और कृतज्ञता से कृपा बरसती है. और तृप्त रहने के सिवा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमको पता है कि हमको जरूरत से ज्यादा मिला है. हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू द स्टेटमेंट दैट वी हैव गॉट मोर देन व्हाट वी डिजर्व? इजंट इट? यस और नो? हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है कि मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला है? If you feel that you have not got anything, that means you have not started your sadhana. That means you have not started your spiritual practices. And contentment
doesn't come. Okay, open secret to all of you. This is only for those people who are there in this room. Okay, ये खाली इन लोगों के लिए जो रूम में है. Open secret बोल रहा हूँ. जैसे गुरुजी बोलते हैं ना open secret, वैसे बोल रहा हूँ. Contentment will never come to a egoistic person. तृप्ति कभी भी अहंकारी आत्मा को नहीं मिल सकता है. Contentment is a characteristic of a devotee. तृप्ति एक भक्त का लक्षण है. समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? अब जो भक्त नहीं है उसके पास तृप्ति नहीं है. See, contentment is not about the state in which you are living. You're living a middle class, higher middle class, upper middle class, and all that. That doesn't come under the society. The poorest of the poorest man can be contented. And the richest man can be the most, person who is never satisfied. And that is the biggest type of poverty that a man can suffer from. That is the biggest type of poverty. If you have everything and you still feel that you have nothing, then you are suffering from poverty of your mind. अगर सब कुछ होते हुए भी ये बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है. There's a beautiful line in Lingashtakam. Ashtadaridra vinashanalingam tat pranamami sada shivalingam. Ashtadaridra. There are 8 types of poverty, and all these 8 types of poverties can come from the mind. You can have everything, but you say, I have nothing, and you are poor. That is the biggest type of poverty that you are in. सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ये मानना बेवकूफी है. अगर दिन में 5 मिनट भी तृप्ति का भाव आ जाए कि हे प्रभु मेरे को बहुत कुछ मिल गया है, उसका मजा ही अलग है. If you have been able to just close your eyes and just say, God, you have given me more than I deserve. Thanks a lot for that. You have achieved what you are supposed to achieve. Just for 5 minutes in your life. केवल 5 मिनट के लिए हर रोज सुबह उठ के. And you know for sure that you have been given more than you deserve. हम लोगों को जितनी हमारी हैसियत है उससे ज्यादा दिया गया है. Contentment can never come for egoistic people. समाधान एक ऐसा अद्भुत रत्न है, तृप्ति एक ऐसा अद्भुत रत्न है जो केवल भक्तों के हाथ लगता है. Contentment is purely the wealth and the treasure possessed by devotees. So clap for yourself. Each one of you is a devotee here. Clap for yourself. If you're even listening to this session right now, you are a devotee. Doesn't matter of which faith, doesn't matter of which religion, doesn't matter of which caste, but you are a devotee and thereby you are contented. तृप्ति से बड़ा और कोई रत्न नहीं है भाई. तृप्ति मिल गई तो मन शांत रहेगा अपने आप. If you are contented, you will accept everything that comes in, good things and bad things. And then you will live in the knowledge. Opposite values are complementary to each other. Sukhaye, dukhaye, you will live through it. Yes or no? Sitoshna sukhadukheshu samasanga vivarchitaha. Bhagavad Gita, Lord Krishna says beautifully. Happiness or sadness, profit or loss, you will remain stable-minded. Contentment gives you that innermost calmness by which you feel happiness, which you can share it with others. Only if you are contented can you share that bliss with others. जब तक तृप्त नहीं हो तब तक खुशी बांट नहीं सकते बेटा.
चांस ही नहीं बैठता। तुम खुद ऊपर से उबल रहे हो एक तवे की तरह, किसको शांत करोगे? अंदर से जब तुम शांत हो जाओगे तब तुमको सारी शांति मिल जाएगी। द मोमेंट यू आर पीसफुल फ्रॉम विद इन इज व्हेन यू कैन स्प्रेड दैट पीस। Otherwise, you are just making a show off of peace. You are not spreading peace. All that external peace that you want to give to others is just a mere temporary requirement. दूसरों को खुश रखते रखते अपने आप को दुखी रखने से बड़ा बेवकूफी और कुछ नहीं है. There is no better foolishness than keeping yourself miserable and making others happy. Come on, whom are you fooling? तृप्ति अपने अंदर की बात है. तृप्ति is something which is a blessing. How long will you do it for others when you yourself are not contented? जब खुद तृप्त नहीं हो तो दूसरों को क्या तृप्त करोगे? अभी तृप्त हो क्या? Are you all contented right now? Now, अभी तृप्त हो? तृप्त हो? Are you all contented right now? Now, now. Contentment is only in the present moment. तृप्ति किसमें है? वर्तमान क्षण में. क्योंकि भविष्य की तो चाहत हो सकती है ना. अभी आपके पास एक बढ़िया सा BMW है, कल को आपको रोल्स रॉयस चाहिए होगा, उसके बाद आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए होगा, है ना? You must be owning a wonderful flat, but you would want to have a bungalow, and then you would want to have a villa for yourself, and then you would want to have a whole province for yourself. Who knows? Where are you going to stop? Contentment is right now. You know, to be honest, a dog is also happy with one bone, but we humans are never happy with anything that we get. एक कुत्ता भी एक हड्डी के साथ तृप्त हो जाता है, और हम लोग, माफ करना, ये हमारे मन की वृत्ति के बारे में बात कर रहा हूं, मनुष्य के बारे में बात नहीं. मन की वृत्ति को देखो. घर के बाजू वाले ने एक और फ्लैट खरीद लिया एक पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. हम लोग कितना तिलमिला जाते हैं. Opposite people, our neighbors, just purchase one more flat for some investment purpose. We get absolutely thrown off. So much of dissatisfaction. My God. When we were kids, when we were in a college, yeah, if at all you know, I'm giving you this live example. My friends went to see a movie. Oh, I have not seen that movie. Thrown off. Your contentment is thrown off. हमारे घर के पड़ोसी ने एक बहुत बढ़िया सा एक बहुत बढ़िया नेकलेस खरीद लिया. अरे वो डिजाइन का नेकलेस मेरे पास नहीं है. वो एक नेकलेस ने तुम्हारी तृप्ति तोड़ डाली. अरे राम राम राम. कहाँ हो? Where are you in this life? Your life is already gone. 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years. Done. Enough. Stop it now. अभी तो रुक जाओ. Stop it right now. How much more will you want to accumulate? What else will you accumulate? All the clothes that you have had for last 10 years, you can't wear it on. Because either you have put on weight or you have come down. Correct? Yes or no? जो भी कपड़े इकट्ठे किए हैं, या तो अभी पहन नहीं सकते क्योंकि हम लोग थोड़े फूल गए हैं या फिर पतले हो गए हैं. आकर्षण, बाहर के आकर्षण के प्रति इतनी बेवकूफी. कुछ लोगों ने आपको क्या गंजा कह दिया, आप जाके हेयर ट्रीटमेंट करवाने लगे. मतलब सर पे बाल नहीं है उसके लिए भी तृप्ति नहीं है. कहां जा रहे? वेयर आर वी गोइंग? इज द फिजिकल ब्यूटी नीडेड?
क्या शारीरिक सुंदरता उतनी महत्वता है? जब तक शादी कर रहे हो तब तक ठीक है, उसके बाद क्या? Of what value is this physical beauty after you are committed to somebody? Wake up, wake up, जागो, अभी तो जागो। कहाँ की तृप्ति, कैसी तृप्ति? ऐसा मन जो केवल बाहरी चीजों के लिए ढूंढता रहता है, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। A mind which is looking out to fulfill its desires only at the physical level can never be contented. Can never be contented. Stop that foolishness right now. Right now. अनुपमा जी ने एक सवाल पूछा है, अगर हम दूसरे को नहीं देखे तो हम उसे पाने के लिए प्रोग्रेस कैसे करेंगे? आपने प्रोग्रेस करने के लिए तो अभी तक बहुत पापड़ बेले हैं। कितने कितने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं अनुपमा जी अभी तक आप? दूसरों को देख के जलन से प्रोग्रेस नहीं होना है, दूसरे को देख के ये जानना कि मेरे लिए क्या बेहतर है और उसके साथ प्रोग्रेस होना है। अभी तक ऐसे भी साधक है जिन्होंने 120 एडवांस कोर्स कर लिए हैं। हमने कितने एडवांस कोर्स किए हैं जी? There are people who have repeated DSN program 15 to 20 times. How many times have we repeated the DSN program? There are people who have repeated Samyama program for 5 to 6 times. How many times have we done it? Only once and left it there. This is the rate of progress that you need to check. ये है progress. Looking at others in different things. Bhaiya, in Western world, outer appearances speaks volume. Bhaiya, please address. Yes, because they are still stuck only at the physical level. And that's why India is going as Bharatiya Vishwa Guru. Because India has touched the depth of the other 7 layers, which the Western world has not. The Western world considers only the body as the living entity. What they don't know is the science beyond this. Manobuddhya hankara chittani naham nacha shrota jihve nacha grana netre nacha vyoma bhumir na tejo na vayuhu chidananda rupa shivoham shivoham. What we are addressing this as this body is nothing but a bag of meat, bone and flesh and urine, which is going to any which ways die. So how long will you just adhere to this body? Make it more artificially beautiful. You should look good. That is enough. You should look good. Bas. One more beautiful question. Societal and pressure from relatives to maintain certain standard of living, which is measured. If people start measuring your world standard of living, then you better live by people. Why are you living for yourself? Then you're just being, then in that case, you also have a leash around your neck, which is controlled by others. ನಾಯಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. We are also living like a dog which is being controlled by others. If others are controlling our life, I'm sorry for being so rude, but knowledge cannot be given in sweet talks. Wisdom and vairagya cannot have sweet talks. I'm sorry. Leave your workplace if your workplace is troubling you so much. Leave your workplace. Work on your own. Create your own magnetism. Contentment is a state in which you are, wherever you are. If society controls you, just remember you don't have the leash in your neck, which the society is controlling. एक कुत्ते की पट्टी बांधी हुई है, सोसाइटी ऐसा चाहता है, सोसाइटी वैसा चाहता है। कहां का पागलपन है ये? How long will you look for society? Had Gurudev also looked for society, we would have not been in 162 countries today. More than that, in fact. Break open your own barriers. Break open your own barriers. सब कुछ हमने अपने ऊपर बांध के रखा है. If Newton was not contented after trying everything, he would have never discovered the gravitational force, which was there. Mind you, Newton did not invent it. Newton discovered it. There are two different things. One is invented, one is discovered. Discovered is something which is already there. Newton discovered
gravitational force, which was already written in our Shastras thousands of years back. गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो पहले से ही बोला गया था. तृप्ति नहीं है तो जिंदगी भी जानवरों की तरह है. If you don't have contentment, your life is as good as animals. You want food from here, you want food from there. I'm not sure how many of you have seen the Indian dogs. अगर आप लोगों ने भारतीय कुत्तों को देखा होगा, वो लोग अगर कोई बाहर के इलाके का कुत्ता आ जाता है उनके इलाके में, तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं. Have you seen that? कोई और दूसरे इलाके का कुत्ता आ जाए तो भौ 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 शुरू हो जाता है. If there is an other locality dog which walks into their locality, they start howling and growling like hell. This is the same thing which is happening to our mind also. कोई और का विचार हमारे सर में आ जाता है, कोई और हमारे सर में कुछ डाल जाता है और हम लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं. What difference is there between them and us then? If there is another thought that you have got from somebody else, if it is a borrowed thought and you are hankering for that borrowed thought, how long will you be contented, guys? How long will you be contented? कब तक तृप्ति मिलेगी? You have got a borrowed thought of an ice cream, of a mint cooler, or of a wonderful pie cake, something. कोई ना कोई चीज, एक नई चीज लेके आए हो. You see somebody who is more handsome, you run behind them. What foolishness is this? And the person who is handsome is also going to die, and you're also going to die. You cannot become as handsome as that person because your karma has got to this body already. What use of it every time you want to prove yourself? I am like this, I am like this. Drop that. मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं. कब तक प्रूव करोगे भाई? जिनको प्रूव करना था वो तो आपको वैसे भी स्वीकार कर चुके हैं. Those who you had to impress have accepted you the way you are already, with all your mistakes, with all your stupidity. And those people who don't want to get impressed will never get impressed any which ways. जो लोग आपसे इंप्रेस नहीं होना चाहते हैं, वो एडी चोटी का जोर लगा लो, वो लोग इंप्रेस नहीं होंगे. तो फिर क्या फायदा ये सब करके? क्या फायदा ये सब ड्रामा करके? What is the use of creating so much of a ruckus around people whom you are going to just work towards it? You want to impress people with your contentment. Your vibes will speak when you are contented. The moment you are in touch with a person who is contented, you will get positivity in your life. You will get hope in your life. You will get love in your life. जो कुछ चाहिए होगा आपको सब मिलेगा उस बंदे से जिसके अंदर तृप्ति है. उससे एक रास्ता दिखेगा आपको. उससे आपका दुनिया का चाल चलन का तरीका बदल जाएगा. You will get a way to live in your life if you are there with a person who is contented. And you can be contented only if you are a devotee. अगर आप भक्त हैं तो आप तृप्त हैं. So are you all devotees? No doubt. But have you practiced contentment? No. Then you improve your practicing of contentment. This is what is called as wealth. इसी को तो धन कहते हैं. कुछ धन को संग्रह किया जाता है. You need to accumulate certain wealth. And one of the wealths that you need to accommodate or accumulate as a spiritual practitioner is contentment. Whatever I have, I am contented. But that doesn't mean that you become lazy, okay? That doesn't mean that you become lazy. You become completely compliant. No. अरे जो होगा होगा चलेगा. ना 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 ना. एक तृप्त आदमी हमेशा हर किसी में 100% देता है. Only when you give your 100% are you contented. जिस किसी में भी 100% दोगे तभी तृप्ति मिलेगी. खाना बनाने के बाद खाने का अगर महक आए तो तृप्ति आती है.
खाना पूरा 100% बनाया हो मन से, तब, हाँ या ना? When you prepare food, when you cook food for yourself, you feel so happy and contented only if you have given your 100% to it. Is it yes or no? That's it. When you give your 100%, you are automatically become contented. देखो, हैप्पीनेस प्रोग्राम के कितने सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं. लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. कंटेंटमेंट, तृप्ति. बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया ना. पिछले 2 साल से नॉलेज देते जा रहे हैं. We've been giving knowledge from the last 2 years, isn't it? Too much of knowledge, no? Let's be contented with it. The point is, how much are we able to implement it? कितना हम लोग इसको implement कर पा रहे हैं? Gurudev has been giving knowledge from, I don't know, from eons, from ages. Of course, in this body, it is a different story, but then his presence has been giving knowledge through so many years. कितने सालों से प्रभु हमको ज्ञान देते जा रहे हैं. कभी भगवत गीता दिया, कभी अष्टावक्र गीता दिया, कभी पतंजलि योग सूत्र. Sometimes is given as अष्टावक्र गीता, sometimes is given the पतंजलि योग सूत्र. एक अष्टावक्र गीता, one Ashtavakra Gita session is enough to hammer your ego and to put you to contentment and say, just shut up now and just stay where you are. जैसे हो वैसे रहो और तृप्त हो जाओ. तरंगेव बुद्बुदाः. That one statement is enough. कि जान लो कि ये पूरी जिंदगी एक बुदबुदे की तरह है, एक बुलबुला है, समुद्र की एक तरंग है. फिर कौन सी इच्छा, कहाँ की तृप्ति, कहाँ का समर्पण, क्या? अभी उठा, अभी गिरा, खत्म. It's just a wave which is risen in the ocean and it's gone. Your body, your life is just like that. It's gone. It's gone. The last 40 minutes that we have spent together, will it come back again? पिछले जो 40 मिनट जो हम लोगों ने स्पेंड किया, अभी वापस आएगा क्या? नहीं ना. You will not get it. Can you be like children 100% now? I'm not saying don't be childish. I'm saying be childlike. Allow your mind to be like a child, fresh every time. एक बच्चे की तरह हो जाओ जो हर समय मुक्त रहता है. वाओ. हम लोग क्या करते हैं? अरे बाप रे. बच्चे क्या करते हैं? वाओ. तो अरे बाप रे से वाओ तक की जर्नी जानी है. What do we do? The moment we get depressed, we get something like, oh my God. And have you seen children? The moment they get something new to do, what they say? Wow. And what happens in our office? The moment we get some new responsibility, oh my God, no extra salary, but extra responsibilities. But then you'll say, oh my God, and then you move to, wow, one more responsibility. And that is where you have grown your life. और वहां पर हम लोग अपनी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं. हे राम, घर में इतना काम है. वाओ, घर में इतना सारा काम है. Oh my God, absolute dejection, so much of work. Oh my God. Wow, so much of work. A contented person says wow in everything. Isn't it? You know, when you do your exams and you say, wow, I did it wonderfully well. A person who has not done well, what will he say? Oh my God, I left this question, I left that question. So a contented person says, wow. Got it? So let's see how many wows we have right now. Just lift your hands and just say, wow. That's it. एक मुंह खोल के बोलो wow. बस. अरे जिंदा हो उसके लिए तो wow बोलो. You are alive right now. Say wow for that. You could have been dead the last moment. You could have been dead the last moment. Isn't it? Yes or no? Just the last moment your breath would have been lost and you're dead. That's it. Where did you go? But wow, you're still here. And that wow brings in that contentment. Wow, I am alive. Isn't it? Yes or no? Hi, Anna.
का मगजमारी दिल पे दिमाग रख के ऐसे बैठे रहना तो हर किसी का काम है। साधक का लक्षण क्या है? वाह, अभी जिंदगी मिली है यार, पूरा काम करते हैं। Normal people will be like, oh my God, one more day. A sadhak will say, a spiritual aspirant, wow, one more day. What is that you're doing with your life? Enhance the quality of your life by saying, wow. अपनी जिंदगी के हर एक क्षण को अद्भुत बनाओ। मुश्किल है? Is it so tough? नहीं ना? Is it so tough? Not at all. You don't drink the same coffee every day, do you? You don't drink the same tea. You want a lemon tea, you want a ginger tea, you want a black tea, you need a full tea. हाँ या ना? Every time you want varieties in teas. Tea और coffee में भी हमको बदलाव चाहिए, हैं? Same salad but with different vegetables. Just think about it. If God would have given you, thanks Adnan, wonderful point. Wonderful point. If at all God would have given you only potatoes, you would have become couch potatoes till now. हाँ या ना? खाली आलू खाते रहते तो आलू की तरफ फूल जाते। पद्म साधना करो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं होता। वाव! और इस वाव को जितना बढ़ाओगे उतनी तृप्ति बढ़ेगी। वाव, भगवान ने एक और प्रॉब्लम भेजा है। वाह, मजा आ गया। और imagine if God would have sent you the same problem every time. हर समय भगवान आपको खाली पेट की बीमारी देता। Imagine if God would have given you only the stomach issues every time, or only a headache every time, or only a throat inflation every time. What would have happened? But God is also creative. He gives you so many different problems in different parts of the body. The left ear cannot be treated by the right ear doctor. The right ear treater cannot be different about the left ear doctor, isn't it? Yes or no? Huh? And now don't go to the extreme saying that, I forget sadhana, then I'm wow. Then Guruji will also give you one tight slap and he will say, come back and do your sadhana, okay? साधना करने के बाद ये ज्ञान पुष्ट होता है. When you do your sadhana, you actually get that confidence to apply the knowledge. If you have not done your sadhana, then you cannot apply this knowledge. साधना किए बिना इस ज्ञान को हम लोग अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं. समझ में आ गई बात? Only with sadhana can you implement this knowledge. Without sadhana, you cannot implement this knowledge. Without your spiritual practices, you can't implement the knowledge. Otherwise, this knowledge is complete theory for you. And that is why Gurudev says, meditate, do Sudarshan Kriya. साधना करो, ध्यान करो, तब जाके ये ज्ञान बैठेगा. Only then will the knowledge settle down in you. Isn't it? Right? So only a sadhak can convert oh my God to wow. Otherwise, everybody will be saying oh my God, oh my God, oh my God. Right? So contentment is a wealth. Gather as much as you can. तृप्ति एक धन है, उसको जितना लूट सकते हो लूट लो. And only a realized master can give away this wealth. एक ज्ञानी ही इस तृप्ति को बांट सकता है. बाकी सब तो दुखी बांटते हैं, बाकी सब तो अहंकार बांटते हैं, है ना? समझ गए ना? Did you understand? Only a realized master can give you the contentment. The rest all, everybody gives us only problems. Isn't it? Are you contented with this session? Or should I stop it here? If you are contented, I will stop. If you are not contented, then how much ever you listen, it is of no use. अगर अभी तृप्त हो तो यही बहुत है, और अगर अब भी तृप्त नहीं हो तो 1 घंटा और बोलूंगा तब भी तृप्त नहीं होगे, तो क्या करें बताओ? If you're contented with these 40-50 minutes of talk, then you have achieved everything. But if you're not contented with this 50 minutes of talk, then even if I go ahead, you will not be contented. So are you contented?
or fully contented, then we can drop the meeting. है ना? This is how knowledge brings a smile on your face. इसी तरीके से ज्ञान आपके चेहरे पे एक मुस्कान लाता है. This is how knowledge relieves you of your burden. And the only way you can live in this knowledge is by meditating and doing your sadhana. केवल ध्यान और साधना के बाद तृप्ति मिल सकती है. बाकी शरीर की तृप्ति तो जानवरों को भी मिलती है. They also, even the animals can feel contented by eating food, by filling their stomach. Even animals can do it. But we are all sadhaks who are above that. Isn't it? हम लोग साधक हैं, है ना? और साधक हमेशा तृप्त रहता है. प्रभु चाहे जैसे भी रखें. However the divine keeps us, we will be contented. है ना? Tomorrow is Amavasya. So for tomorrow's Amavasya, if all of you are ready, we can just do some meditation. If all of you are ready, we can join in for a meditation session tomorrow. ठीक है? मंजू जी, आपको कुछ कहना है? आप अनम्यूट कर सकते हैं. जय गुरुदेव भैया. जय गुरुदेव. भैया इतना अच्छा बोलते हो, इतना अच्छी दिल से बोलते हो ना, एकदम नॉलेज अंदर ही सीप इन होती है. कोई डाउट ही नहीं रहता कि ये नॉलेज कहीं इधर उधर हो जाए. बहुत ही अच्छा आप बोलते हो और इतना मजा आता है, कुछ कहने की हद नहीं. मैं सेशन नहीं अटेंड कर पाती. लोकल हमारा सत्संग होता है तो 8 बजे तक नहीं पहुंच पाते हम लोग. तो थैंक यू सो मच. और मैं सोचती हूँ थोड़ा पतंजलि भी आप शुरू करो, पतंजलि पर भी. पतंजलि का क्योंकि वो भी एकदम याद हो जाएगी. आप बोलोगे तो याद हो जाएगी, बार बार हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा. मैंने उपरति का आपका लेटेस्ट सेशन रिकॉर्डेड ही देखा था. मैं बता नहीं सकती, मैंने 13 एएमपी की है. मुझे उपरति और तितिक्षा में आज तक कभी डिफरेंस, पढ़ो तो समझ आता था फिर भूल जाता था. अब कभी नहीं भूलने वाली है नॉलेज, कभी नहीं भूलने वाली. थैंक यू सो मच. थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट. गुरु कृपा, गुरु कृपा. बढ़िया है. अच्छा, अगर किसी का जिंदगी में ये ज्ञान उतर जाए तो ये इस शरीर का बोलना भी सफल हो पाया है, बस और कुछ नहीं, है ना? बढ़िया. बस तृप्त रहना है. हाँ सुनीता जी बोलिए. भैया, you literally drive me crazy with your knowledge. आपका presentation उपरप्ति सुनने के बाद when I wake up, I say, oh भैया ने बोला smile करो. Smile enthusiasm. It starts and I keep reminding. आपका एक एक word जो है ना, कहाँ धस जाता है भैया. I'm so thankful to you. कुछ महीने पहले ही आपसे मुलाकात हुई और पूरे जगह आपका आवाज आता है. पता नहीं कहाँ से क्या क्या. नागमन भैया मुझे मोटिवेट करते हैं. धन्यवाद नागमन भैया. Unbelievable, you have changed me so much. कितनी मैं बिगड़ी हुई पागल लड़की थी, आप मुझे नए रास्ते पे लाते रहे, ला रहे हो. धन्यवाद. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. कितना एक्यूमुलेशन हो रहा था, कचरा इकट्ठा कर करके, अब सब निकल रहा है. आत्मा से भी अपने जो वर्ल्डली एक्यूमुलेशन जो करे हैं, इट्स हैपनिंग. आई फील इट. आई फील द ग्रेस. आप जो बरसा रहे हो ना ब्लेसिंग, उसका कोई मोल नहीं है. ये आत्मा से आवाज निकल रही है. मुझे पता भी नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैं आई डोंट नो. All I can say, I'm in tears. I'm speechless. Thank you. So many people here are connected. I feel their vibration. स्वर्णा जी से मेरे कभी बात नहीं हुई, पर उनसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलती है. नागमन भैया, डेविड से I never talk, but I see his face and I say, oh my God, what a divine soul. Thank you, thank you, thank you. I'll shut up myself. You know, all these beautiful souls are there with us to just spread that beauty around us. सब लोग अपने आप में एक सुंदर, गुरुजी कहते हैं ना कि उनको खाली मोती और क्या कहते हैं, हीरे इकट्ठा करने का शौक है. तो हम सब भी एक मोती और हीरे हैं. गुरुदेव has got a beautiful way of saying that he collects only diamonds and pearls. So each one of us is a diamond and pearl. And how can a diamond and pearl be dissatisfied?
कैसे एक हीरा अतृप्त रह सकता है? हीरा तो वो है जो दूसरों को रोशनी देता है, आप कैसे अतृप्त रह सकते हो? है ना? अगला सेशन हम लोग मुमुक्षत्व पे रखेंगे, द लास्ट सीडी, द लास्ट पिलर, द फोर्थ पिलर ऑफ नॉलेज, दैट इज मुमुक्षत्व. It's going to be a beautiful thing. You know, you can bring in all the people whom you know, because mumukshatva is a blessing. It is not a wealth even, it's a blessing. Mumukshatva is a blessing, वो एक आशीर्वाद है. भैया समाधान पे भी बोलना थोड़ा सा, समाधान भी क्लैरिटी नहीं होती है एएमपी में. तृप्ति और थोड़ा सा. समाधान एक ही है. तृप्ति, आज जो बोला ना, तृप्ति, तृप्ति और अच्छा समाधान और कंटेंटमेंट एक ही चीज है. जो आप हमारी अच्छा शत ठीक है. संपत्ता है, शत संपत्ति है ना, शमदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, तो समाधान ही तृप्ति है, कंटेंटमेंट. अब जो है सो है वही समाधान है. जो है ओके सो है वही समाधान है, बस. ओके, थैंक यू. जब आप समाधान रहोगे, तृप्ति में रहोगे, तो आपके चेहरे पे अपने आप एक मुस्कान आ जाएगी. यू विल स्माइल थ्रू एवरी सिचुएशन बिकॉज यू नो दैट यू आर टेकन केयर ऑफ. तृप्ति जहां रहती है, समाधान जहां रहता है, वहां पे पता चल जाता है कि भाई हम जिस नैया के राम खिवैया वो नैया फिर क्यों डोले. है ना? है कि नहीं? जिस नैया के राम खिवैया वो नैया फिर क्यों डोले. है ना? बस ये एक मन में डाल लो. ब्रिंग दिस इन योर लाइफ फॉर वंस. लेट दिस बॉडी बी यूजफुल टू अदर्स. लेट दिस बॉडी मेक अदर्स अ डिवोटी. बस इतना एक रख लो. ये एक भाव रख लो कि भाई इस शरीर से एक और बंदा भक्त बन जाए. बस एक भक्त बना लो जिंदगी में, एंड देखो फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे ख्याल रखी जाती है. एक और भक्त को जन्म देने का दायित्व अपने ऊपर लो. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग अ डिवोटी इन दिस यूनिवर्स एंड सी हाउ द डिवाइन टेक्स केयर ऑफ यू. कर पाओगे ना आप सब लोग? कर ही रहे हो तो आगे भी करते जाओ. बट कंटेंटमेंट इज नॉट फॉर ईगो. समाधान कभी अहंकारी के पास नहीं आ सकता. ठीक है? आज के लिए इतना ही. जय जय राधा रमण हरि बोल. 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 हरि बोल. जय जय राधा रमण. 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 हरि बोल. हरि हरि बोल. जय जय राधा रमण 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 हरि बोल. जय जय राधा रमण. 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 जय जय राधा रमण हरि बोल. 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 हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल. स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते.
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रियतां पुण्डरीकाक्ष सर्वयज्ञेश्वरो हरिः। अस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीडिते प्रीडितं जगत्। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। दासोऽयं इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। अगले सेशन मुमुक्षत्व। जय गुरुदेव।